topic given to us for our GD today. So our topic is mental health in India. So I think in current scenario, when we all are living in digital world, it is a very important topic for all of us. So I found this topic to be very relevant because government is also working towards this issue, mental health, uh, in India also and in internationally also. So I invite you all to participate in this topic and give your views. Yes, I agree with the point of Anurag that we have to self-evaluate and make awareness about the mental health in India, because nowadays we're seeing that students who are living in for coaching industry, mostly for coaching industry, are committed suicide due to their mental pressure also, mostly in quota also, due to their JE or different competitive examination. So we have to make some awareness and making some organization so that their mental health or issues can be resolved. I agree with Ramakant. along with that, ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि मेंटल ट्रॉमा से जूझ रहे हैं। कितने बार ऐसा होता है कि हम सेल्फ इवेल्युएट नहीं कर पाते, पता नहीं होता कि इससे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो हमें उसके स्पेक्ट में अवेयरनेस को इंक्रीज करना चाहिए कि क्या क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हैं कि हम इस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो आई थिंक दैट विल I agree with Dheeraj. Along with that, along with self-evaluating, parents and teachers should also evaluate students, check their behavior. From that, they can analyze whether whether student is pressurized or going through bad phases. So they can evaluate and talk with them. मुझे लगता है जो अभी तक के अगर हम मोस्ट कॉमन रीजंस ढूंढेंगे कि क्यों हो रहे हैं, तो अभी सबसे पहले हमारे यहाँ कोविड-19 आया था, तो जिसके वजह से स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ा था और एंजाइटी का पूरा एक फेज चल रहा था। तो उस समय मेंटल हेल्थ लोगों की बहुत ज्यादा उस समय बहुत खराब चल रही थी, बिकॉज घर पे बैठना भी ऑल टाइम वर्क फ्रॉम होम इज नॉट एन ऑप्शन। बाहर निकलना, घूमना, दोस्तों से बात करना, ये भी मतलब एक अच्छा ऑप्शन होता है मेंटल हेल्थ क्राइसिस से डील करने के लिए। और दूसरी चीज होती है, आज के डेट में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो ये भी एक मेजर फैक्टर है। कंपटीशन और स्ट्रेस और वर्कलोड बढ़ने की वजह से भी मेंटल हेल्थ पे इश्यूज हो रहे हैं। जो कोविड के बाद जो इंडिया में मेनली कोविड के बाद जो मेंटल हेल्थ के जो केसेस है वो राइज हुए थे, क्योंकि जो मोस्टली लोगों ने जॉब लॉस्ट हो गया था, काफी लोगों की जॉब छूट गई थी, तो लोग मेंटली काफी इफेक्ट हुए थे। एक मेन रीजन था। मैं ही यहाँ पे अभी दिल्ली में पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने देखा है, यहाँ पे काउंसलिंग की मतलब फैसिलिटी हम लोग को दी गई है कि मतलब सैटरडे संडे वहां पे आते हैं काउंसलर्स, आप उनसे बात कर सकते हैं। और हमें एडवाइस किया जाता है कि हम अपने दोस्तों से बात करें, कोई भी प्रॉब्लम है बेस्ट सोर्स है कि अपने दोस्त से, अपने माँ बाप से बात करो इसको डील करने के लिए। इसमें adding one more perspective, like social media is also important in creating mental health issues in all age groups. Like people are continuously increasing their screen time, like all age group are increasing their screen time. So social media are creating mental health issue in all age group, like in youth and in old age people also. Like they are highly influenced from the content on the social media, and then they get depressed. So I think yes, I agree with you. I agree with Ayush. आयुष के बाद में मैं एक एग्जांपल है Ayush, because in social media we have a platform to address these issues. I think that we need to divide this topic into two categories. The first category we can talk about is that what are the factors which is affecting the mental health of our India, and the second category we can divide into like how we can overcome it. Yes. So I have written down some points like factors which are affecting the mental health. The first one is the increase in the unemployment rate. So we can overcome this problem by being skilled. We can also join or participate in some courses and make ourselves skilled, so we can get a job earlier than other candidate people. And the second factor which I have written is there is a lack of good infrastructure in our India, like the hospital sector, and there is a pressure on our youth also, for the pressure for the marriage also, and for the pressure for having a good marks and to get a good. Yeah, so we can say that societal pressure is there up to some extent. Yeah, for the reason. Awareness also.
मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि सोशल और हमें कल्चरल इंडियन एजुकेशन फैक्टर्स में सोसाइटी हम एक एक पॉइंट चीज ये देखते हैं कि जो इंडियन है वो काफी कंजर्वेटिव होते हैं इन चीजों को शेयर करने के लिए, कि इन्हें कितना लगता है कि अगर मैं कुछ बात करूंगा तो लोग मुझे पागल समझेंगे, तो एक क्योंकि शेयर करें ज्यादा। मैं इसमें एक एग्जांपल ऐड करना चाहूंगा। अभी आपने रिसेंट में एक बिहार की न्यूज सुनी होगी, जिसमें एक मेंटली इंजर्ड इंसान जब एक मंदिर से प्रसाद ले रहा था तो उसको लोग चोरी का आरोप लगा के उसकी मॉब लिंचिंग करके उसकी हत्या कर देते हैं। अभी ये रिसेंट की न्यूज है। तो हमने देखा है कि जो सोशल होते हैं वो जो मेंटली इश्यूज होते हैं उनको ऐसा इशू यूज ही नहीं करते। वो सोचते हैं कि एक तरीके से ये बीमारी नहीं है, वो इसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, वो एक इंसान उससे ग्रसित है। तो डेफिनेटली ये एक हम लोग के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। मेंटल हेल्थ इज आल्सो लाइक रेगुलरली काउंसलिंग होनी चाहिए और बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब उसको भी एक कंसर्न की तरह देखना चाहिए। लोग सोचते हैं डिप्रेशन एंजाइटी एक बीमारी नहीं है, उसको भी एक डील करने का तरीका होता है। वो इंसान पागल नहीं है। ये सबको मतलब अवेयरनेस लाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग उसको भी मैं think वो देना चाहूंगा medical solution। camps can जैसे also be हम conducted. Free जैसे medical हम देख camps can सकते be हैं, conducted for the counseling sessions. So मैं सिर्फ वो देना चाहूंगा सॉल्यूशन। जैसे हम देखते हैं to कि counter स्कूल में the हमें mental health. अगर कोई हमें चोट लगती है उसके लिए हमें फर्स्ट एड को दिखा दें कैसे यूज करा जाए, स्कूल में हम सिखा देते हैं। मुझे लगता है कि मेंटल इशू डील को इशू करने के लिए हमें स्कूल में कुछ कैरिकुलम ऐड करना चाहिए, ताकि बच्चे हम लोग सेल्फ इवैल्यूएट करें और डील कर सकें, जैसे वो फर्स्ट एड को यूज करते हैं उस Adding to the Hir's point, I would like to say our education system is also responsible for this mental health. Like students are only knowing about the career opportunity like engineering and medical, and there are lots of opportunity which students are not aware of. So there should be a proper mentor in the school from the base itself, that at least students get to learn how many opportunity they can get in their career. And because of only 2-3 career opportunity, they put themselves in that competition and then they get depressed. जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, ये बहुत बड़ा एक रीजन है जिसके वजह से ये एंजाइटी और स्ट्रेस और ये मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये भी है कि बच्चे आजकल हम देखते होंगे यूथ मतलब सिगरेट अल्कोहल इन सब चीजों के पीछे भागते हैं ये सोच के कि दिस माइट हेल्प, बट एक्चुअली वो एक सोल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए अवेयरनेस लाना भी जरूरी है कि ये सारी चीजें हमारी हेल्थ को और डिग्रेड करेंगी, ये भी और मेंटल हेल्थ को और खराब ही करती है ये सारी चीजें भी। या मैं एक एग्जांपल करना चाहूंगा। जैसे ये रूरल बैकग्राउंड में विलेजेस में क्या होता है कि लोग अंधविश्वास में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो लोग कुछ फ्रॉड लोगों के पास कांटेक्ट में आ जाते हैं और वो धीरे धीरे वो मेंटल हेल्थ का इशू बन जाता है। वो लोग डॉक्टर्स को दिखाते नहीं है और वो एक तरह से अंधविश्वास का सहारा लेते हैं और ये कार से मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा इशू हो जाता है। Mental health can also be improved by participating in games. So for that schools can also make compulsory to participate students for at least one game. हर चीज में मतलब स्पोर्ट्स को भी बैलेंस करके चलो। I want to add one more perspective. Like there is a lack of communication between student and parents also. Like parents put their expectation on the body on their child, and then child have to carry that expectation. Also in India, child don't talk with their parents. Like they don't tell that in what type of situation they are in. So that proper communication must be there, and both students or youth and their parents must know what are the situation the student is facing. So by that they can consult any other counselor or they can solve in home also. जैसा कि गवर्नमेंट द्वारा भी होता है कि आजकल स्कूलों में नो बैग डे जो पॉलिसी भी लागू की गई है। जैसे कि 7-7 एक दिन ऐसा होता है कि आप बच्चे स्पोर्ट्स के लिए एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सके ताकि उनके लिए मेंटल प्रेशर कम हो सके। मैं इसमें एक नया डोमेन ऐड करना चाहूंगा। अगर हम लोग मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हम लोग ये बस नहीं बोलते कि मेंटल इलनेस के बारे में। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज एजेंसीज ऐसी न्यूज लेके आते हैं जो डिवीजन लेके आते हैं पीपल्स के बीच में, तो उनके ऊपर एक मेंटली इम्पैक्ट पड़ता है जिसके कारण वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो वो भी एक मेंटल हेल्थ के अंदर हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं उसको कि क्यों ऐसी न्यूज या फिर कोई ऐसी हमारी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जिससे डिवीजन हो और आपस में लोग पढ़े। रमाकांत एक और पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। एक पॉइंट ये भी होता है कि खान पीन का भी बहुत इम्पैक्ट जाता है। आज की डेट में हम लोग बर्गर पिज्जा हमें लगता है ये सारे खाना खाने से भी बहुत अच्छी चीज है, नहीं। एक बोलते खान पान का भी बहुत ज्यादा हमारे हेल्थ पे प्लस हमारे मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट जाता है। तो एक अच्छी डाइट प्लान को भी फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि मेंटल हेल्थ ठीक चलने के लिए।
I think Yeah, when we are daily talking routine about or daily life, we talk can about categorize this thing farmers into two and parts. women also, One is like the urban they area are and other is the rural area. So in my opinion, mental diseases are more common in the urban areas, or we can say that awareness is more in the urban areas than in the rural areas. So we Yes. can, मैं I इसमें एक think, पॉइंट ऐड discuss करना upon that. चाहूंगा कि एक स्टार्टअप है जो कि टाटा ग्रुप के द्वारा फंडेड है। उसमें क्या करते हैं कि जो ओल्ड एज पीपल है और जो यंग पीपल है उनको वो करते हैं, वो कनेक्ट करते हैं ताकि वो एक दूसरे से मिल सके और आसपास से कम्युनिकेट कर सके, आसपास की जो एक दूसरे शेयर कर सके। इससे क्या होता है, जो ओल्ड एज होम में जहाँ पे वो काफी लोग अकेले फील करते हैं, वो अपने अपने आप को थोड़ा शेयर करते हैं, तो उनका मेंटल ट्रॉमा डिक्रीज होता है। तो ये काफी अच्छे स्टेप है। हमें इस तरह की स्टार्टअप को प्रमोट करना चाहिए, जिससे जो ओल्ड एज होम है उनके भी स्ट्रेस लेवल वो हो सके। धीरज धीरज तो तुम्हारी मैं बात इसमें एक मुझे और सही लग डायमेंशन रही है, क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज ना मुझे लगता है हर डोमेन के लोग फेस कर रहे हैं। ओल्ड एज वाले भी फेस कर रहे हैं अपने लेवल पे, जो बाकी यूथ है वो अपने जगह पे फेस कर रहा है इन द टर्म्स ऑफ कॉलेज और समथिंग, और जो हम लोग का वर्क वाला जो कल्चर है वहां पे लोग अलग टाइप का। तो मतलब यहाँ पे हर डोमेन के लोग चैलेंज फेस कर रहे हैं Yes, मेंटल women and farmers are also Yes. facing a mental health problem. Like we are seeing that the suicides of farmers are increasing continuously due to various reasons like drought or flooding, or also. So we have to consider them also, and women also, like the domestic violence or the pressure of dowry and many other things are also there, So which creates that is the mental same health. thing Yes. that अल्कोहल और इन सब का Women जो are also यूसेज है facing. इसको लिमिट करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए। सोशल मीडिया का किसी ने पॉइंट रखा, तो मुझे लगता है वहां पे भी रेगुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद के लेवल पे हमें खुद को वर्क करना पड़ेगा इसमें। यस, मैं एक और डोमेन ऐड करना चाहूंगा कि आप लोग कभी देखोगे फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे भी लोगों को जज किया जाता है, जिसके कारण उनके ऊपर बहुत ज्यादा मेंटल इंपैक्ट पड़ता है। अभी रिसेंट में एक मूवी आई थी बाला करके, उसने काफी अच्छे से बताया था कि कैसे लोगों के जब बाल कम होते हैं तो उनके अंदर कितना ज्यादा मेंटल इंपैक्ट पड़ता है और उनकी शादियां नहीं हो पाती, जिसके कारण भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो वो डबल एक्सेल लॉन्ग टर्म मूवी में आई आप थी, देखो। उसमें भी यही सारी nowadays चीज we बताई गई have थी कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस वहां पे उन लोग को जज किया गया था, बट उनकी जो क्वालिटीज थी वो नहीं देखी गई थी। तो ये एक मतलब फेक इमेज है जिसपे पूरी सोसाइटी चल रही है, जिसपे वर्क Yes, करने की and जरूरत है। I think and social also media there is the is biggest. and also there is also one point Yes, which is I the agree. lack of Right? good Like work-life from there, balance. social media can cause many और problems. कंपनी में वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं होता है, इसके कारण देयर इज अ मेंटल प्रेशर ऑन द एम्प्लॉयज आल्सो। तो सॉल्यूशन ये हो सकता है कि कंपनी प्रोवाइड इंसेंटिव्स, जो भी ओवर टाइम वर्क करे या फिर एकदम फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होने चाहिए ताकि मेंटल हेल्थ ना हो ड्यू टू द पुअर वर्क लाइफ बैलेंस आल्सो। तो also कुछ भी अवेयरनेस कंपनी प्रोवाइड करे, this can be a Also, to solution reduce also. the digital tech addiction, we can do the digital detox, in which we can specify a day in a month in which we will not use any digital devices to reduce our addiction to the digital. That will increase our mental. It will help our mental health. I think we This is cannot also the link increase these in the things directly, population, that digital things increase in lead the to these mental population level diseases. is Should not also the relate, reason. in my opinion, directly to this. There are obvious reasons for it. I think But I globalization think is also when responsible we for the get mental health addicted issue in to India. addicted to technology, then we will waste our Yeah, the time. seclusion So part is when there we waste in our time, many so people because increase of the digital technology. stress That will is correct. increase, so mental health will degrade. अनिकेत, मुझे वही लगता है बात कि है, अगर रेगुलेट करने की जरूरत है, क्योंकि उसका Indeed. यूसेज भी है। क्योंकि अगर हम अपने घर से दूर रहते हैं तो हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। वी नीड Yes. व्हाट्सएप, वी नीड टू कनेक्ट, क्योंकि हम जब दूर रहते हैं ना घर से, तो हमें कनेक्ट करना जरूरी है अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए। सोशल Yes, मीडिया भी जरूरी है क्योंकि वो भी हमारी लाइफ को बैलेंस रख के चलती है, बिकॉज अदरवाइज हर Yes, जगह से yes. डिस्कनेक्ट होके हम और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे। Yes, वहाँ पे एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो कि जो सोशल technology मीडिया के जो addiction फेक is bad. कंटेंट्स होते We हैं, should not फेक addict to कंटेंट्स वगैरह technology that will उनको increase the stress and will affect our mental health. I think we are मुझे लगता है कि जो अगर हमें social media, but मेंटल we इश्यू are को कम nowadays करना not है तो हम क्या connecting कर to the सकते हैं? people of our हम society. योगा का I जो think योग है उसकी हेल्प ले सकते हैं, कि हमें पता है कि योग और मेडिटेशन काफी अच्छे वे है कि अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए, क्योंकि योग और मेडिटेशन से काफी अच्छा इफेक्ट पड़ता है हमारे माइंड को। तो अगर हम उनको अपनी डेली रूटीन में ऐड कर लें फॉर 5 to 10 मिनट्स, दैट विल बी गुड होगा हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। योगा मैं इसके मेडिटेशन सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन ऐसा मुझे बताना एक चाहूंगा पॉइंट कि लगता अगर है कि मेंटल एजुकेशन हेल्थ लेवल में पे ना अगर अगर आप इसको सबसे बड़ा इम्प्लीमेंट एक जो करेंगे। पॉइंट आ रहा है वो ये भी हो सकता है कि जो बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हर वो इंसान जो खाली बैठा है उसको अगर वो इंसान काम करने लगे और डिवोट करने लगे ना, तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाली चीज आती है, और वो हम उसको प्रोडक्टिव वे में जब खुद को यूज करते हैं ना, तो हमें एक सेल्फ मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो मुझे लगता है ये भी एक या आई एग्री विद यू। मैं इसमें जैसे ये सॉल्यूशन ओल्ड में एज एक में भी, पॉइंट ओल्ड एज पीपल्स में भी ये होता है कॉमनली
उन लोगों को, उनको जैसे भी ओल्ड एज हो जाती है तो उन लोगों की नींद कम आने लगती है, नींद उनको आती नहीं अच्छे से, Plantation कर लेते अनिद्रा हैं या वगैरह फिर होती कोई है, चीज। उनको मेंटल हेल्थ इश्यू होते हैं। और तो इसके लिए यही है कि उन लोगों को कुछ बुक्स पढ़े या फिर कुछ ऐसी चीजें एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो ताकि वो लोगों को इस सब से दूर हो सके, या मैं मेडिटेशन इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप एजुकेशन लेवल पे इसमें ऐड ऑन करेंगे, मान लीजिए तो स्कूल लेवल पे अगर बच्चों को ये सिखा दे कि टेक्नोलॉजी का कैसे प्रॉपर यूज किया जाए, कैसे इनसिक्योरिटीज को दूर किया जाए, और साथ ही साथ उनको मेडिटेशन और जो अपने वो भी होते हैं फिजिकल एक्टिविटीज को कैसे यूज किया जाए आपकी मेंटल स्ट्रेस को रिलीव करने में, तो ये काफी एक अच्छा इंप्लीमेंट होगा फ्रॉम द स्कूल वर्ड्स, और वो बच्चे अपने फैमिलीज को भी बताएंगे और उनसे पेरेंट्स भी उससे काफी सीख सकते हैं। I think we should गवर्नमेंट also के let द्वारा भी the नेशनल मेंटल हेल्थ parents to प्रोग्राम भी add their चलाए point जाते हैं। in my opinion. Also, parents pressurize Yes. everyone, every students to get the 90% above marks. So that should be that is मतलब concerned. पेरेंट्स को भी Parents देखना should चाहिए कि बच्चे को गाइड करना चाहिए, वो अपनी हॉबीज को भी फॉलो करे, अपने पैशन को भी फॉलो करे। लाइक गिटार बजाना पसंद है तो वो भी करो, तुम्हें स्पोर्ट्स पसंद है स्पोर्ट्स भी करो, बट एक बैलेंस होना चाहिए हर चीज में, मेरे अकॉर्डिंग। एंड आई थिंक फ्रेंड्स, जो भी यूथ होती है उनमें ज्यादा मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम होता है। लाइक उनमें एक तो सबसे पहले वो 5-6 साल अपने दे देते हैं अपने लाइफ के कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अब बाद में कॉम्पिटिशन लेवल इतना ज्यादा है, अब बाद में उनको पेरेंट्स का प्रेशर होता है, रिलेटिव्स का प्रेशर होता है जॉब मैरिज के लिए, तो वो ज्यादा फेस करते हैं मेंटल हेल्थ। और प्लस वैकेंसी भी कम आ रही है, दिस कैन बी द आल्सो फैक्टर। तो इसके yes, सोल्यूशन क्या parents हो सकते हैं? या उसके लिए one भी more एक प्लान भी solution I होना would चाहिए उन like to लोगों के give. लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज में। जैसे कि लोग यूपीएससी की, मोस्टली लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वहां उन लोगों का अटेम्प्ट होते हैं, उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन उनके पास प्लान भी नहीं होता। कई लोगों के पास प्लान भी अगर होता है तो वो लोग अपने आप को कैरियर बैलेंस कर करके सकते हैं उस चीज को मतलब या कर पाते हैं लॉन्ग लास्टिंग। जो अगर उस चीज को चलाना है तो उसके लिए आपके पास अगर प्लान बी है, या दैट वर्क्स। I think a student also, Yes. youth must also follow one, at least one ideal person they can make in their life, and they can follow him. Like what are the how their ideal face the challenges. Like he or she can make APJ Abdul Kalam or many other person ideal in their life. So by that they can learn so many things. So या मैं this इसमें can also be they एक one can और make one एग्जांपल solution. habit. सॉल्यूशन ऐड So करना चाहूंगा I कि would like to लोगों को mention क्या है one आजकल, point. यस, जैसे And आप also, I आप would like देखेंगे to कि लोगों को mention क्या one होता है point कि is आप that सेल्फ कॉन्सेंट्रिक होने जा रहे हो, आप इंडिविजुअल लेवल पे इतने सेल्फ कॉन्सेंट्रिक हो जाते हो कि आपको दूसरों से कोई लेना देना ही नहीं होता। तो अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे ये डिसाइड करोगे कि नहीं, मेरे को एक पर्सन की अगर कोई वो प्रॉब्लम है तो उसकी मजाक ना उड़ा के उसकी सॉल्यूशन पे बात करनी है या फिर उसको एक Yes, अच्छी correct. एडवाइस देनी है, तो इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप खुद भी वर्क करेंगे तो काफी लोगों का मेंटल हेल्थ इश्यू से बचा सकते हैं। तो डेफिनेटली हम लोग को इंडिविजुअल लेवल पे अभी अपने आप को इवेल्युएट करके उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए। Okay, everyone. Now it's a it's good point, and done. also एक Yeah, point you ये can. भी है कि It's done. Okay. एक So conclusion was to be done by whom? Sia, I guess. yes ma'am. Okay, go ahead with the conclusion. Okay, so I would like to conclude this topic. So we have a very good discussion, and due to by this discussion we came to two factors, two categories. The first one is that what are the factors which is affecting our mental health, and the other category is that how we can overcome this. And the factors which affecting mental health is that the increase in the population level and also increase in the unemployment level, and there is lack of good hospital sector or education sector, and there is also pressure on our youth, also pressure for the marriage and good to getting good marks or percentage, and also there is a poor work-life balance also. And the second factor can be the lack of communications among students, teachers, and parents also. And the things which we have discussed is about how we can overcome it. So we can overcome it by being skilled or to get a good hospital and education sector, and to increase awareness also, and to give counseling to others, and to on the individual level we can do some yoga exercise or some meditation also. This is the point which we have discussed till now. Thank you, Okay. ma'am. Fine. Now, see, many of you should be aware about the mistakes you're committing. Now, this is a free end topic. You understand? Free end topic where I'm not giving you any of the heading like challenges in mental health of India, or some kind of, you can say, how to improvise, how to eradicate it out. Nothing was given to you. It was a free end topic, just a heading. Now, whenever such topics come, first part is the introduction should be really good and solid one.
Anurag, it was the introduction was very, you can say, meager one. Why? You did not mention like mental health is something which is a serious concern nowadays. It's spreading its awareness since last passage of years. You were not aware about the mental health in the last, you can say, 20 years before. No one used to talk about it. 10 years before, no one used to talk about it. It has just become a passage of concern from the recent times. This is something that you need to mention in the topic's introduction also. Maybe it is mental health, depression, isolation, such topics, they have a similar type of introduction. Okay, so it should be good morning, my teammates. The topic of today's discussion is based on a quite a serious concern, that is mental health in India. The awareness programs or the mental health that is being put into, we have different perspective of health. We have physical health, we have, you can say, take into consideration, and that we discuss psychological health. But none of us used to discuss about mental health so far. Now, none of you were even discussed about what are the dimensions of mental health. You know, like anxiety is one dimension. You can say it as out your psychic mood orders, mood depressions. Some people have bipolar. That is a mental health. None of you discussed. Everyone was like, bus, 2-3 things were there. Awareness फैला दो इसकी, ठीक है? किस तरह से हम उसको वो रोक सकते हैं? कौन सी movies कर रहे हैं? बस this was your topic of concern, which was basic one, very basic line. How would you becoming different from others is when you take this topic into a beautiful consideration. पहले इंट्रोडक्शन अच्छी होनी चाहिए थी, उसके बाद आप एक एक simultaneously you would have discussed, suppose any of you would have started. Now this is a topic which requires the youth concern. We being the youth need to discuss about the topic, every aspect of this topic. First, definition. मैं हमेशा बोलती थी, आपको मैंने बहुत टाइम बाद ऐसा फ्री एंड टॉपिक दिया है कि डेफिनेशन डिस्कस करनी बहुत जरूरी होती है ऐसे टॉपिक की. जब डेफिनेशन डिस्कस कर लोगे, उसके बाद आप इसके स्टेप्स, चैलेंजेस, किस किस तरह के टाइप्स होते हैं मेंटल हेल्थ के, वो डिस्कस करते हैं. जो रामाकांत और स्नेहल डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग द मूवीज, इट वाज अ गुड पॉइंट. यू ट्राई टू गो फॉर द एग्जांपल्स, लेकिन वो कैसे कर सकते थे? इवन द सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज, इवन द फिल्म इंडस्ट्रीज, नाउ एवरीवन इज ट्राइंग टू रिलेट एंड यू कैन से हाईलाइट दिस कंसर्न. सो इट इज नॉट इवन यू कैन से ऑन इंडिया लेवल, बट ग्लोबली इट इज ऑल्सो बिकमिंग अ बिग कंसर्न. Okay, nowadays you have number of helpline numbers where you are, even you have some kind of a mental health problem or someone is facing some kind of depression issues, the person can contact and they might discuss the problems. Deepika Padukone was associated with, you could have associated with the names also, that she was dealing with the mental health problem and she herself took an initiative. Now all celebrities and after that many people are taking the initiatives. Now what are the initiatives count in it, वो आपको डिस्कस करने चाहिए थे. मतलब बहुत चीजें जनरिक में चले गए, बट बहुत अच्छे पीपल की हमारी जो पॉपुलेशन है, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज देयर इन द मेंटल हेल्थ. नाउ इट इज मोर स्प्रेड इन द यूथ एज कंपेयर टू द ओल्ड एज, बिकॉज या ईटिंग हैबिट्स वन ऑफ द कंसर्न. द वे वी थिंक, द वे वी यू कैन से डिस्प्ले is dependent on what we eat. It reflects, our body reflects that thing. So we have the poor nutritional level also. That is why we are not able to think properly. We are very much influenced by the sectors of, you can say, the social media. So this is another concern. So you could have divided into number of perspective, and you understand this is very globally level important topic. It can come as a mental health, depression, what are the challenges, you are different perspectives of health can also be out in it, and you could take this as a perspective, as a dimension of it. So not a good introduction. And similar way, Sia, it is not about discussing all the points. Conclusion is that this is a topic we have discussed, a very serious concern today, and we have discussed multiple dimensions related to it. What we have collected it out, an idea is how we can make the people aware. What are the celebrities actually doing it? I mean to say, you have to very shorten your ideas and then say it out. Being the youth, we promise one another that we would actually make more of the people aware and try to, you can say, take the people out of it who are globally associated with the mental awareness programs. Because make the people associated with this run in a you can say longer manner, or you can say on a global manner. So that is where you end it out. That is where you introduce you out. Both were very average. They were not up to mark. Maybe you guys have attended GD after a long time. That can be one reason which I can decode. Right? So बिल्कुल अच्छा नहीं था, intro भी नहीं और ना ही confusion. In between the people who were doing good, Snehal, you did good today. Same for Ramakant. Ayush participation was nice. अजय, एक प्रॉब्लम है बस, पॉइंट्स अच्छे चल रहे थे, हेडर्स लाने की कोशिश करा करो. जैसे अब अवेयरनेस प्रोग्राम्स पे आप जाते हैं, लोग कैसे करते हैं, उसको एक हेडिंग दो ना. दैट वुड मेक योर पॉइंट मच मच बेटर. ठीक है,
Malika ke points, Malika, you were not able to participate much. Not even Tom Jones. I could not understand any of the points given by this. ठीक है, तो बहुत कम points थे. धीरज, it was very average today. आज इतनी अच्छी नहीं थी. आज जो मुझे अच्छी लगी थी, that was स्नेहल की participation बहुत अच्छी थी. But स्नेहल over participation नहीं करना शुरू कर देना. You have to calm yourself up also in between. Let others also participate. तो ओवर पार्टिसिपेशन का भी नहीं होना चाहिए, वो गलती हो जाएगी. ठीक है, आयुष की पार्टिसिपेशन नॉर्मल थी. आयुष एक आधा पॉइंट्स और अच्छा चाहिए था मुझे. जिस तरह से रामाकांत और स्नेहल एग्जांपल्स की तरफ पोर्ट्रे कर रहे थे, आयुष चुप ही हो गया आज. ठीक है, नहीं मैम, रमाकांत हमेशा एग्जांपल देता है, तो उसी से एक्सपेक्टेड. हाँ, एग्जांपल इज अ गुड पॉइंट ऑफ गिविंग इट. कैच ईच अदर्स पॉइंट. मैं यही बोलती हूँ ना, किसी की अच्छी चीजें सीख लो, किसी की बुरी चीजें उससे दूर हो जाओ. जैसे मैं डिकोड करती हूँ. ठीक है, अब इनफॉर्मल ना ही आज स्नेहल का कुछ इनफॉर्मल था, ना ही धीरज का था. वो चीजें लर्न कर रहे हो, पर हेडर्स मिसिंग कर रहे हो. ठीक है, हेडर्स की तरफ जाओ. अनुराग, अनिकेत कोई बहुत आज मुझे बहुत डिफरेंट नहीं लगा. ठीक है, पार्टिसिपेशन भी कम लगी मुझे, तो मुझे पार्टिसिपेशन ज्यादा चाहिए करके. मैंने आपसे आज मैंने वो टॉपिक लिया जो काफी टाइम से हमने छोड़ रहे थे, फ्री एंड टॉपिक्स. वी आर नॉट डिस्कस सिंस लॉन्ग द फ्री एंड टॉपिक्स. दैट इज मच रिक्वायर्ड. Okay, so अब याद रखना, and it is for everyone. So like it is a good crowd today. Tomorrow we are going to have a session on group discussion. It will be in the afternoon, approximately 1 to 2 p.m. where I'll be discussing how you have to attend the group discussion, like just basis on what's this topic. If the topic is you can say free end topic. If the topic is about advantages, disadvantages. So I'll just be guiding you some of the liners which you need to remember it out. सिर्फ याद करनी है. कंक्लूजन में क्या बोलना है उसको मिस मत करना. ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डू नॉट मिस इट आउट. वी वोंट हैव अ एक्चुअल जीडी. वी कैन लीव दैट पार्ट फॉर वन डे. वी विल हैव व्हाट आर द मेन क्रक्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, एंड यू कैन डिस्कस एनी ऑफ द पॉइंटर्स. कोई डाउट्स है, कोई पॉइंटर्स है, यू कैन ब्रेक इट दैट एंड दैट आल्सो. ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. अटेंड इट नाइसली एंड यू कैन राइट डाउन. इट विल बी जस्ट अ राइटिंग वन. 20-30 मिनट्स का होगा, पर राइट कर लेना अपना मैक्सिमम ऑफ इट. ठीक है, और पार्टिसिपेशन से इस टॉपिक को अभी और एक परसेंटेज एंड ऑल दैट वो थोड़ा देख लो. जैसे ऑनलाइन जाके गूगल जाके like 60 to 70% is occupied in this. Then एंटरटेनमेंट सेक्टर क्या कर रहा है, सोशल सेक्टर क्या कर रहा है, गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है. इन सेक्टर्स को टारगेट करते हैं फ्री एंड टॉपिक्स में, जो तुम लोगों ने छोड़ दिया है. ठीक है, सिया, यू हैड एनी डाउट? यस मैम. सिया, वर यू स्पीकिंग समथिंग? एनी डाउट? हाँ मैम, एक्चुअली मैम अगर मेंटल हेल्थ को डिफाइन करना होगा तो लाइक व्हाट यू कैन से. सॉरी, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड यू. मैम अगर मेंटल हेल्थ को डिफाइन करना लाइक जैसे आपने बोला ना इंट्रोडक्शन में मेंटल हेल्थ को डिफाइन करना, डेफिनेशन को. एग्जैक्टली, आपको इंट्रोड्यूस करना है. लाइक देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एंड वी टेक इनटू मेंटल हेल्थ इज अ सीरियस कंसर्न व्हिच इज बीइंग पुट इनटू यू कैन से द लाइमलाइट or highlight since last 6 or you can say since last decade only we have started talking about it. एक introductory line होना बहुत जरूरी है. Definition you can talk about, that's something that affects your this level of your thinking, your consciousness, everything that comes in the mental health perspective. And there are different modes of mental health. आपका psychic आता है, आपका mood swings आता है, आपके bipolar swings आते हैं. वो किसी ने डिस्कस ही नहीं किया. I don't think किसी को पता भी था इन चीजों के बारे में. नहीं पता अभी. ठीक है, मेंटल हेल्थ के डायमेंशंस होते हैं जो आप लोगों को डिस्कस करने चाहिए, जिससे आपका आंसर और इंटरेस्टिंग बने. हम जैसे लेवल्स होते हैं, जैसे मतलब एक बिगनिंग लेवल होता है जिसमें कम लेवल पे एंजाइटी होती है. एक होता है पैनिक अटैक होता है, जो कि बहुत ज्यादा जब मतलब एंजाइटी होती है तब पैनिक अटैक्स की प्रॉब्लम आती है लोगों में, तो उसको भी आप बोल सकते हैं. जैसे टाइप्स होते हैं एक्चुअली स्नेहा, जैसे मूड हेल्थ के पर्सनालिटी के डिसऑर्डर्स होते हैं. किसी को साइकोटिक होते हैं, किसी को एंजाइटी के लेवल पे होते हैं, किसी को मूड के लेवल पे होते हैं. तो ये आपको इतना नहीं भी पता होगा, दैट इज फाइन. आप थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हो. जैसे यू कुड डिस्कस आउट कि हाँ, की पर्सनालिटी के ट्रेट्स डिफरेंट हो जाते हैं. मेंटल हेल्थ में कई लोगों की पर्सनालिटीज होती है जो बाहर से बहुत खुश लगता है बट अंदर से वो डीपर एनालिसिस कर रहे होते हैं, एंड वी आर नॉट इवन अवेयर टू डिकोड. नाउ देयर आर मेनी पर्सनालिटीज. आपने देखा होगा, यू कुड डिस्कस अबाउट आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट गर्ल who died last year. She was shooting in the afternoon and after an hour she committed a suicide. So you understand कि किस तरह से imbalance होता है. You're shooting in an industry and after 1 hour you are committing a suicide. What it shows that your personality is very different. There are different traits to catch this thing also. So we need to discuss. We need to become more social with our family. Yeah, I don't remember the name.
She was an actor of some comedy program. I don't remember the name of it. So जो भी था, तो इस तरह से you could decode some of the people's name also. जैसे दीपिका पादुकोण को सबको पता था, एनजीओ क्या क्या वो एसोसिएट कर रहे हैं सबको पता है, मेंटल हेल्थ से। हम दीपिका पादुकोण के बाद बाकी और भी एक्टर्स सामने आए थे, जैसे कि मतलब हनी सिंह और ऑल, उन्होंने भी अपने फिर मेंटल हेल्थ को, बट उसका सिंगल में नहीं करना कि ये नहीं एक में हनी सिंह बोल रहे, एक में दीपिका पादुकोण, सबको एक में ही चैनलाइज, लाइक डिफरेंट एक्टर्स। एग्जांपल, इट कैन बी स्ट्रीमलाइन बाय दीपिका पादुकोण, हनी सिंह, व्हाटएवर द नेम्स यू आर, जस्ट इन अ स्ट्रीमलाइन यू पुट एग्जांपल। और ये नहीं उसको पूरा खींचते रहना है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात आई तो सारा इकट्ठा कर दिया। दैट इज द वे यू हैव टू डू इट। ठीक है, चलो प्रैक्टिस कर लेना इस टॉपिक को, और टुमारो डू अटेंड द जीडी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो, टेक केयर गाइस, ऑल द बेस्ट।